नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताज़ा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गुजरात बुलेटिन। बात होगी अहमदाबाद की, जहां 8 महीनों से किसानों और महिलाओं से ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया गया। साथ ही बात होगी गांधीनगर की, जहां बापूपुरा गांव पंचायत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की सोच के साथ सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर। अहमदाबाद ग्रामीण एससीबी ने 6 महीनों से किसानों और महिलाओं को निशाना बनाकर लूटपाट करने वाले, कान काटने वाले गैंग के 2 आरोपियों संजय झिलिया और दशरथ देवी पूजक उर्फ दशा को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। ये गैंग रात के समय साणंद जीआईडीसी, केरल जीआईडीसी और चांगोदर इलाके में अकेले लोगों पर हमला कर लूटपाट करता था। पूछताछ में आरोपियों ने 6 लूट की वारदातें कबूल की, जबकि उनके पास से 6.99 लाख रुपए कीमत के 57 ग्राम सोने और चांदी के गहने जब्त किए गए। गैंग का एक साथी प्रकाश रतिलाल देवी पूजक अभी वांटेड है। पुलिस की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल कम हुआ और उन्हें राहत मिली। एलसीबी अहमदाबाद ग्राम्यની ટીમ દ્વારા 2 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેનું નામ સંજય દશરથ જીલિયા અને દશરથ માવજી દેવી પૂજક છે। એક કોદરિયાલના રહેવાસી છે, એક જુડાના રહેવાસી છે। એ બંને જે આરોપી છે એ આરોપી બહુ જે ગુના કર્યા હતા એ ટોટલ 3 પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં છેલ્લા 6 મહિનામાં 6 ઓફેન્સીસ બનેલા છે। और एमा माणकोल, बलदाना, सियावाड़ा ए आ रीते टोटल 6 गामडाओमां 6 लूटना बनाव बन्या हता। और आ लूटमां जे खरेखर जे एल्डरली लोको जे खेतरमां सूता होय या जे गामने थोड़ो जुदो कोई एनो मकान होय ए मकानमां सूता होय एना या तो कान कापीने या पछी झूंटीने जे बूटी अने एनी काननी जे बूटी हती आ लई जता हता। और जे कोई जागी गया हो तो एने साथे माथाकूट पण जे मारामारी पण करता हता। तो एने कारणे जे नाना जे खेडूतो हता एने जे बहु एक तो एल्डरली हता अने बहु नाना खेडूत हता जे खेतर में सुईने जे आपणी पाकना रक्षण करता होय ए बधामां एक दहशतनो माहोल हतो। और आनी गंभीरताने ध्यानमां लईने जो आ एलसीबीनी टीम द्वारा बहु सारो डिटेक्शन करवामां आवेलो छे। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गांधीनगर के बापूपुरा गांव पंचायत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की सोच के साथ सम्मान समारोह और सोशल गैदरिंग कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर नए सरपंच और पदाधिकारियों का सम्मान किया गया और गांधीनगर और मेहसाणा जिले के चौधरी समाज के युवाओं नेताओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मनसा एमएलए जेएस पटेल, बीजेपी के अनिल भाई पटेल, पूर्व मंत्री विपुल भाई चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम में पब्लिक बोरवेल, बर्ड हाउस और ठंडे पानी की सुविधा का उद्घाटन मनसा एमएलए जेएस पटेल ने किया, जिन्हें बापूपुरा पंचायत के सरपंच प्रकाश भाई चौधरी ने जनसेवा के मकसद से बनवाया था। जेएस पटेल साहेब, अनिल पटेल साहेब, कनु भाई चौधरी साहेब, पूर्व गृहमंत्री विपुल भाई चौधरी साहेब, पूर्व डेरीना चेरमेन अशोक भाई चौधरी, पूर्व धारासभ्य अमित भाई चौधरी साहेब, आ बधा अमारा चौधरी समाजना आगेवानो अहींया हाजर हता अने एमने साक्षीमां अमे लोकार्पण करायुं। अमे अमारा मनुष्यनुं तो पण ध्यान राख्युं छे अने पक्षीओनुं पण ध्यान राख्युं छे। अने पाणी, जल है तो जीवन है एटले मारा गामना अंदर गुजरात सरकार द्वारा जे पाणीनो बोरवेल आपवामां आव्यो हतो एनुं खातमुहूर्त करी अने पाणी आखा गाममां वितरण करीए एवी व्यवस्था अमे ऊभी करी छे। एक 5 अमे पाणीनी परबो बनावी, ठंडा पाणीनी आखा गाममां अलग अलग जग्याए। एक पक्षीघर नवुं बनाव्युं अने एक पाणीना बोरवेलनुं ओपनिंग करवामां आव्युं। अने अमारा चौधरी समाजना जे माणसा तालुकाना जेटला पण गाम छे बधा तमाम गामना सरपंचश्रीओ अने भारतीय जनता पार्टीना आगेवानश्रीओने अमे आमंत्रण आपी अने एमने बोलाव्या हता अने एमनुं स्वागत कर्युं। बापूपुरा मुकामे આજે પાણીની પરબો આખા ગામની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએ 5 જગ્યાએ પાણીની પરબો મૂકવામાં આખા ગામની અંદર એક સરસ પંખીઘરનું પણ આયોજન કર્યું। પંખીઘર ખૂબ સારું બનાવવામાં આવ્યું છે અને પાણીના ટ્યુબવેલ એટલે પાણી, પંખીઘર અને પરબનું ખૂબ સારું આયોજન હતું આજે અને તનેના લોકાર્પણ કરવામાં આવે છે। આખા વિસ્તારની અંદર
બાપુપુરાના પાદરેથી જતો એટલે માણસાથી કડા સુધીનો ફોરલેન પણ મંજૂર કરવામાં આવે છે. માણસાથી ભીલવાઈ સુધીનો હોય, પછી બાલવા ચોકડીથી ગુજારિયા હોય, આ બધા ફોરલેન અત્યારે હાલ નવા ટેન્ડરો પણ થઈ ગયા છે. સાથે સાથે માણસાથી પેથાપુર હોય, માણસાથી કલોલ હોય, આ બધા ફોરલેન પૂરા પણ થઈ ગયા છે. માણસાની અંદર 425 બેડનું સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ બની રહ્યું છે. ટૂંક સમયમાં મેડિકલ કોલેજનું પણ આપણે ખાતમુહૂર્ત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જિલ્લા કક્ષાનું ફાયર સ્ટેશન, જિલ્લા કક્ષાનું સ્પોર્ટ્સ સંકુલ, આ બધું જ તૈયાર થઈ ગયું છે. ગામે ગામ તળાવ ખોદાય છે, ગામે ગામ તળાવ ભરાય છે. પ્રાથમિક શાળાઓ જે પતરાવાળીથી એ નામશેષ કરી દીધી છે, બધી જ ધાબાવાળી સ્કૂલો બાળકો માટે કરી દીધી છે. અને જ્યારે આખા 84 ગામોની અંદર અત્યારે ફક્ત 12 ગામની અંદર ગેસ કનેક્શન બાકી છે, બધા ગામે ગામ ગેસ કનેક્શનો પણ ઘરે ઘરે આપણે જોડાણ આપી દીધા છે. એટલે ક્યાંય પણ કોઈ સમસ્યા ઊભી થાય તો આપણે બાટલાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. એટલે આખો સમગ્ર વિસ્તાર એવી રીતે ડેવલપ થયો છે. અને આની અંદર કેન્દ્રના ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી ભાઈ અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો જેટલો હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરીએ એટલો ઓછો છે. સાથે સાથે નદી ઉપર પણ 3 બેરેજો અત્યારે મંજૂર થઈ ગયા છે. એક આપણા અંબોડ મુકામે બેરેજ બની રહ્યું છે અને લગભગ 60% કામ પૂરું પણ થયું છે. નવો બેરેજ પણ આપણે અંબોડથી ઉપર 12 કિલોમીટરે રાજકોટ મુકામે એનું ટેન્ડર પણ થઈ ગયું છે. ટૂંક સમયમાં ખાતમુહૂર્ત કરવા જઈ રહ્યા છે. સાથે સાથે હમણાં નવા બજેટની અંદર પણ અંબોડથી ઉપર એટલે મવડી જો હાથમાંથી નદી મળે છે એના ઉપર ગેડ કરીને કામ છે, ત્યાં પણ નવા બેરેજનું આપણે ઓનલાઈન ટેન્ડર પણ અત્યારે ઇસ્યુ કરી દીધું છે. એટલે નદી ઉપરના બેરેજો બની રહ્યા છે, ફોરલેન બની રહ્યા છે, હોસ્પિટલ, મેડિકલ કોલેજ, દરેક તળાવ ગામે ગામ तलाव खुदाई से गांधीनगर से सीनू संवाददाता दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।